हाय नमस्कार। अ, अभी हम मॉड्यूल देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट अगर से गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से कुछ गलती होती है, इफ एनी मिस्टेक इज देयर फ्रॉम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउ द लाइबिलिटी कम्स अपॉन द गवर्नमेंट फॉर इट। नाउ इसके ऊपर देयर इज अ लिटिल बैकग्राउंड टू दिस। इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड से कॉलोनियल स्टेट से ब्रिटिश एरिया से जब आज की डेट में हम आ रहे हैं, तो हमारा स्टेट जो है वर्क्स एज ए वेलफेयर स्टेट, द बेनिफिट ऑफ इट्स सिटीजन, दैट्स व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड. Like if you look at Article 39 DPSP part of it, there are a lot of welfare schemes that the state can provide. Now जब भी स्टेट काम करता है, इट हैज टू jurisdiction that it within it works. एक, it works on sovereign functions which are purely related to the government, to the working of the state, and there are functions which are नॉन सॉवरेन इन नेचर. अब इसका डिस्टिंग्विश बताता हूँ. सॉवरेन इन नेचर जैसे लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट्स. टॉर्ट्स का मतलब पहले टॉर्ट्स कर लेते हैं. जब एक सिविल रॉन्ग होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हेन देयर इज अ सिविल रॉन्ग, द टॉर्चर्स लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट रिफर्स टू द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिविल रॉन्ग. कुछ सिविल रॉन्ग किससे होती है? किसी गवर्नमेंट के एजेंट से, सर्वेंट से, ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से, और इंजरी होती सिटीजन को. तो सिटीजन क्या कर सकता है? सिटीजन केस फाइल कर सकता है. अभी केस फाइल कर सकता है, ये किधर है ऑप्शन है? ये अवेलेबल है एज अ राइट इन आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच स्टेट्स द यूनियन ऑफ इंडिया may sue or may be sued in relation to its affairs. यानी आप स्टेट पे केस कर सकते हैं और स्टेट भी आप पे केस कर सकता है, और ये दिया किधर है? आर्टिकल 300 के अंदर. नाउ दो टाइप के फंक्शन रहते हैं, सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन, जो हमने शुरू में बात करी. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंक्शन. सॉवरेन इज विच इज कोर टू द स्टेट, फॉर एग्जांपल डिफेंस, इंटेलिजेंस, करेंसी. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शंस. आपका the RBI part of it, the monetary part of it, defense is there, national security is there. So these are very core to running a state. Border protection is there, law and order is there. So all this is very core to the state. So this is considered as sovereign function. अभी नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या करता है? एज अ वेलफेयर स्टेट हमारा स्टेट कोर के अलावा बाकी काम भी करता है. फॉर एग्जांपल रेलवे चलाता है, हॉस्पिटल्स ऑपरेट करते हैं, स्टेट हॉस्पिटल्स ऑपरेट होते हैं, रेलवेज चलाते हैं. देयर आर सर्टेन कंपनीज विच आर पब्लिक कंपनी, विच आर गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग ज़्यादा है. इट कुड बी लाइक HP, इंडियन ऑयल. सो मेनी कंपनीज आर देयर विच नाउ स्टेट उनको भी रन करता है. इफ़ यू सी द टॉप मैनेजमेंट, उसमें भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स एंड IAS ऑफिसर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द बोर्ड. नाउ गवर्नमेंट व्हेन इट्स रनिंग सॉवरेन फंक्शन, यानी लॉ एंड ऑर्डर है तो पुलिस इन्वॉल्व है. अगर बॉर्डर प्रोटेक्शन या डीप डिफेंस है अगेंस्ट अनदर कंट्री, देन आर्मी इज इन्वॉल्व. तो जब वो फंक्शन करता है और उसके टाइम कोई ऑफिसर से गलती होती है, अगर पुलिस से गलती होती है ड्यूरिंग लॉ एंड ऑर्डर, तो सॉवरेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है उस लाइबिलिटी के लिए, और दूसरा रहता है नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए क्या लाइबिलिटी रहती है. सो वी आर गोइंग टू लुक एट दीज टू एस्पेक्ट्स इन डिटेल. तो ये जो लाइबिलिटी बनती है, कैसे बनती है? जब स्टेट का कोई ऑफिसर, अभी नॉन सॉवरेन फंक्शन होगा से रेलवे या हॉस्पिटल में कोई कर्मचारी जो गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उससे कुछ गलती होती है, तो जब एम्प्लॉय से, स्टाफ से, एजेंट से गलती होती है, तो हम बोलते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी. फॉर एग्जांपल वाइकेरियस लाइबिलिटी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. जब आपकी कार आपका ड्राइवर लेके जाता है और कोई एक्सीडेंट होता है, सामने वाले का नुकसान होता है, then your driver has made a mistake, but ultimately you are the principal. So he is just an acting as an employee, as your agent. But the responsibility lies with the owner of the car, which is you. So vicarious liability means though the mistake is made done by your employee or your agent, the ultimate responsibility as a principal owner of the car is yours. Same way, when state may police is functioning to conduct the sovereign function and police makes a mistake or some issue,
So in that case, it's a vicarious liability and there are rules governing that. नॉन सॉवरेन फंक्शन से रेलवेज चला रहे वो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और उधर किसी ऑफिसर से, रेलवे ऑफिसर से नॉन सॉवरेन फंक्शन करते समय कोई गलती होती तब उसका लाइबिलिटी क्या रहता है। तो ये इस चैप्टर का दोनों का डिफरेंस, दिस इज द गवर्निंग एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट इज द काइंड ऑफ लाइबिलिटी दैट द गवर्नमेंट टेक्स अप is basically being managed by two, three important case laws. So let us look at one of the first cases, which is P&O case बोलते हैं। P&O case में क्या हुआ था, ब्रिटिश टाइम की बात है, that there was some carriage was going on, carriage यानी वो घोड़ा गाड़ी type carriage was going on, and at that time so let's look at this case of P&O steam navigation versus Secretary of State of India। इसमें क्या हुआ था, ये स्टीम नेविगेशन का कैरेज जा रहा था, ये घोड़ा गाड़ी टाइप कैरेज था, तो इट वाज गोइंग, और स्टीम नेविगेशन जो डॉकयार्ड में लोग काम कर रहे थे, स्टेट के लोग थे, उनसे कुछ स्टील का आइटम गिर जाता है, आयरन का आइटम, और उससे वो कैरेज को नुकसान पहुंचा, मतलब घोड़ा घबरा जाता है एंड समथिंग हैपन्स। तो वो केस फाइल करते कि आपके ये एम्प्लॉयज से जो लोहा जोर से गिरा, इसकी वजह से हमारे कैरेज को इम्पैक्ट हो गया, तो ये केस बना। फाइनली कोर्ट ने तो स्टेट बोला था कि हम अपनी सॉवरेन काम कर रहे हैं तो हमको तो इम्यूनिटी मिलेगी, तो हमारे को इस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो कोर्ट ने ये पाया कि ये जो आप काम कर रहे थे डॉकयार्ड में, ये कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं था, आप कंट्री के डिफेंस या किसी में नहीं थे, आप भी एक रेगुलर बिजनेस की तरह ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम पे। तो जो आपकी गलती हुई है और उसको आयरन के गिरने से वो सामने कैरेज को नुकसान हुआ है, तो वो आपको भरना पड़ेगा। सो दिस इज बिकम अ वेरी फाउंडेशनल केस एज फार एज स्टेट लाइबिलिटी इज कंसर्न। इसी से रिलेटेड एक कस्तूरी लाल केस बना था, तो आफ्टर सम टाइम, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस इन 1965, इसका बैकग्राउंड ये था कि कुछ रेड हुई थी, पुलिस ने कुछ जब्त किया था सामान, कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स और कुछ थे, कुछ एक रेड के टाइम पे, और वो अपने पुलिस स्टेशन में उसको लेके आए। अभी जो पुलिस स्टेशन में लेके आए उसको जमा किया मलखाने में, तो उसके बाद वो सामान उधर से गायब हो गया। तो जिसका सामान था उसने केस फाइल किया कि भाई मेरा तो आप लेके गए थे रेड के टाइम, जो आपको मिला आप लेके, अब वो गुम हो गया तो आप मुझे दो। तो सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम मेंशन दैट जो पुलिस का फंक्शन हो रहा था वो सॉवरेन फंक्शन था। उस टाइम से अगर पुलिस से कुछ गलती हो गई तो वाइकेरियस लाइबिलिटी नहीं बनेगी। उन्होंने P&O का केस लगाया, उसमें सॉवरेन नॉन सॉवरेन फंक्शन देखा, और तो अरे ये तो सॉवरेन फंक्शन है पुलिस ड्यूटी, तो उनसे कुछ गलती हो गई तो नो प्रॉब्लम। तो 1965 विच दिस केस जजमेंट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। उसके बाद there are many situations where the welfare state has moved up, and we find that Supreme Court has become very very alert, and judicial activism has played a very very important role, and the rights given in the constitution in chapter 3 have become very very paramount important. And now from the Kasturi Lal case in 1965 to now, if you see the right of equality से लेके life and liberty, personal speech, all these rights have become very essential rights। इसमें फिर एक बाद में नीला भट्टी बहरा केस आया था स्टेट ऑफ उड़ीसा से 1993 में। उसमें क्या हुआ था, कस्टोडियल डेथ हो गई थी, पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल डेथ हो गई थी, which the court said was a violation of the fundamental rights of Article 21। See the difference, ये भी सॉवरेन मैटर है, पुलिस का मैटर है, लॉ एंड ऑर्डर है, पर आदमी की कस्टडी डेथ हो गई है, जेल के अंदर उनकी थाने में ही डेथ हो गई, but the court held the state to be responsible for it, which means even in sovereign duties now the landscape has changed, the whole thinking has changed। नाउ द कोर्ट लुक्स एट इट दैट अगर सॉवरेन फंक्शन में भी अगर ऐसा कुछ हुआ जिससे सिटीजन के राइट्स इम्पैक्ट हुए, देन द कोर्ट लुक्स एट इट इन अ डिफरेंट व्यू देन इट लुक्ड इट इन 1965। सो ये मेजर डिफरेंस आपके आंसर में ना, तो P&O केस आप मेंशन करो, इसके बाद कस्तूरी लाल का केस, and then if you mention the Neela Bhatti Baira case, I think this wraps up most of your logic for this answer। So now we have done what is the liability of state in sovereign and non-sovereign। अभी हम देखते हैं liability of government in contracts, what does that mean। Now liability of government in contracts
this liability that is coming out from a with इसका एक background है. See, Article 298 is specifies that a business executive power of the union and the state extends to carry on business, acquiring property, making contracts. यानी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इश्यू कर सकती है किसी को भी बिजनेस के नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए. नाउ when it is doing contracts, issuing contracts, acquiring property, इसमें contracts लगते हैं. तो 299(1) के अंदर के अंतर्गत inside of 299(1) you have three conditions which have to meet to know the contract is valid. तो contractual liability जब बन रही है तो there are three conditions which make it valid. One, it should be expressed on behalf of the president and governor. जैसे order होगा in the name of the governor or in the name of the president the following order has been issued. So it is expressed to be made by the president, it is expressed to be executed by the president, and it is in writing. It is not oral. The contract from the government has to be in writing on behalf of the governor or the president, and it should be executed by the authorized person. For example, collector is authorized, so he can issue an order for make something on, but the order will be in writing and it will be on behalf of the governor or the president. So this is mentioned in Article 291 Part 1. So in that case, the Indian Contract Act then plays a role between the party and the state. So everything follows, accept offer, acceptance, consideration, everything of the Indian Contract Act follows. Now what happens if the contract is not as per Article 299 subclause 1? Then it is void. For example, अगर वो contract oral है, कलेक्टर ने orally बुला के बोला कि आप ये कर दो और बाद में वो क्लेम करता है तो contract is not valid. सेकेंडली, कोई और डेजिग्नेशन है जिसके पास पावर ही नहीं है, ऑथराइज ही नहीं है वो ऑर्डर रिलीज करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और वो निकालता है ऑर्डर कि चलो भाई तुम सड़क बना दो या समथिंग लाइक दैट, देन इन दैट केस द कॉन्सिक्वेंस इज नॉन कंप्लायंस ऑफ द 299 आर्टिकल 1, सॉरी आर्टिकल 291 सब क्लॉज 1. अगर 299 सब क्लॉज 1 अगर फॉलो नहीं हुआ, तीनों कंडीशन जो मैंने मेंशन, राइटिंग में होना चाहिए, ऑथराइज पर्सन से होना चाहिए, and it should be executed or expressed to be executed on behalf of the president of the government. इनमें से कोई भी एक मिसिंग है तो वो void माना जाएगा. This is what it means. There is no, और इसमें ना कुछ implied contract नहीं है कि तुम दे देना मैं देख लूंगा पैसे मिल जाएंगे. There is nothing of implied in this contract. Everything is express. This saves the public money. ऐसे नहीं कि any government official goes on to do any sovereign or non-sovereign function and releases orders, and बाद में government is wondering what is happening and public money is going for waste and cases are piling up. So because of Article 298, the sovereign can do business, and in 299(1) it is clearly mentioned what is the kind of business they can, what are the conditions in which the business can be done. So this is, second is liability of the governments and contracts. Now let's look at what is doctrine of Estoppel and doctrine of Waiver. Now let's look at doctrine of Estoppel and doctrine of Waiver. Now doctrine of Estoppel is very very simple. What it says is अगर जो वादा किया आपको निभाना पड़ेगा. It's very simple. You promise something, please keep your promise. So if the government, this equitable doctrine prevents the government from resciling or going back on a clear promise where a citizen has relied upon their to their detriment. For example, it is a check on administrative arbitrariness. अगर कोई एक स्कीम निकला जिसमें ये बोलते हैं कि अगर आप अपने घर पे सोलर लगाते हैं तो आपको इतना सब्सिडी मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स में या इलेक्ट्रिक बिल, कुछ ऐसा स्कीम अगर कभी आया, आई एम जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, and in that case people have gone and spent some amount of money in putting the solar panel, and later on the government decide no, it's not financially viable, we will not go ahead, but he's gone and invested, and then he files for a judicial review. Look sir, I have invested based on your promise, now you're withdrawing back. So in this case doctrine of promissory estoppel will come into force and the judiciary will review the order accordingly. दूसरा explanation is explanation of doctrine of waiver. Now how does this particular thing comes into operation?
Now, if if it is mandatory for the government to do something, for mandatory to do something, एंड सामने से ऑफिसर उसको वेव करता है कि नहीं, नो प्रॉब्लम, ये कंडीशन इज नॉट वेरी वेरी वैलिड, सो आई विल वेव इट. सो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर लग जाएगा दैट द पर्सन कैन नॉट वेव द राइट्स. द वॉलंटरी रिलिंक्विशमेंट ऑफ नॉन लीगल राइट्स cannot be waived off. Voluntary relinquishment of the legal rights is not possible. The government official cannot waive mandatory statutory requirement designed in public interest. For example, गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है तो तीन बेसिस पे निकलता है. आर्टिकल 299 क्लॉज 1 सब बोलता है. फॉर एग्जांपल राइटिंग में होना चाहिए, expressed on behalf of the president or the governor, or it should be released by the authorized person. Now, if a government official says कि नहीं, राइटिंग का जरूरत नहीं, आप माल सप्लाई कर दो गवर्नमेंट का, वी विल सी. Now he cannot waive that statutory right. So this is example of doctrine of waiver. So we have seen two important aspects in this. One is doctrine of estoppel, मतलब जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, whatever you promise please stick to it. Second is waiver, like any statutory requirement is there कि आपको ये फॉर्म के साथ ये सब लगाना है and it is as part of the law, then that officer cannot waive it. Very important example is article 299 सब clause 1, जिसपे तीन कंडीशन है हर गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए. अगर वो किसी को देते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये तीनों में से एक फुलफिल्ड नहीं है, then the contract is void and no state official can waive that. So this is what it means by doctrine of estoppel and waiver. Now let's look at state statutory immunity or for act of state. यानी state कुछ करता है तो उसको किस cases पे immunity मिलती है. Now it is very simple. In acts of state, where state has acted or a act done by the sovereign, which is act done by the government against an alien, means against another citizen of another country or a person residing outside his own territory. कोई और बंदा है, हमारे कंट्री का सिटीजन नहीं. इफ द स्टेट एक्ट्स अपॉन सच अ पर्सन as part of his sovereign duty, then that is not the subject matter of the court, and the state is immune from jurisdiction of the domestic courts. दूसरा रहता है जब स्टेट अपना सॉवरेन फंक्शन करता है, then it cannot, the courts cannot inquire. For example, certain things in sovereign, say foreign policy, why are we dealing with another state in this particular manner, or during war, or during any kind of negotiations which are involved. So these are sovereign functions. Why the defense forces is moving like this, why the police structure is like so. Anything which is sovereign in the nature, which purely belongs to the state authority to protect the nation and take care of the interest of the nations with regards to another citizen, citizens of another country, or duties related to foreign policy, war, treaty making. All these are sovereign functions, and the local court do not, domestic courts have no jurisdiction on the matter. So state has immunity on such matters. Next we come on to government privileges and legal proceedings. If there is, the state can claim certain immunity in specific matters. For example, कुछ matter where a matter is, say suppose is for public interest या national security के अंदर कोई, and the court is asking for certain details, it can then seek immunity on the matter. So certain matters which are required for effective public administration, the special rights and immunities can be used by the government, and is very clearly mentioned in the Indian Evidence Act also. Then we have section 123 and section 124 of the Indian Evidence Act, in which the government can claim a privilege from not showing certain documents of public interest matters to the court. So that is also something, a privilege that the government has with itself. The modern judicial approach applies the balancing of the interest, the test where the court determines if the injury to public service from disclosure outweighs the benefit of the administration of justice. The executive is not conclusive. For example, अब आज की डेट में with all the judicial activism, the government, the courts will look into if the state is claiming immunity,
under which clause, if it's matters of national security, defense, law and order, and very public safety, some issues involved, government may seek immunity and the court may grant it. But if it's related to the citizens at large and the rights given in Constitution Chapter 3, then the court may look into the matter and come up with. So this is a very evolving. ये आगे जाके जुडिशियल एक्टिविज्म और उसके भी अंतर्गत ये इवॉल्व हो रहा है, ये फाइनल नहीं है. दिस इज व्हाट यू कैन राइट एज एन आंसर. ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.